Okay, I think you have written something in the question. Oh, there is no option for that. Okay, 5 p.m. Sir, you are audible and the screen is visible too. Okay. So you have written in the questions. This time you have written in the questions. Okay, no problem. Now I can understand. If you have any question, write in the chat box. We cannot write in the, there is no option. Okay. You write in the question box only if you have any question right now. So may I start? Okay. Thank you. So I should go like this. Then this one, how can I? So this should be right here. Okay, I cannot see this. Okay, so let's start. Regarding the sleep, you must have read sleep from physiology and little bit from biochemistry. Just a minute. So let us discuss about the sleep. You must be knowing that sleep has two phases. One is REM sleep, rapid eye movement, जिसमें whole body का muscle relaxed, but in contradiction to that, there is rapid eye movement, which requires contraction of the muscles. So it is a paradoxical sleep. Another type of sleep is non-REM sleep, where this paradoxical finding is not found. This physiology you must have learned from your physiology department. The uppermost line is beta wave, which is the finding of active calm down state of mind. This is the EEG finding, electroencephalography. And this is the only way you can understand how different stages of sleep passes on. Then stage 1 of non-REM sleep in the second line. Second row is the stage 1 of non-REM sleep, where you can find sawtooth like little bit slower waves. These are theta waves. Then stage 2 and stage 3 is called deeper level of sleep. And there is a stage 4 also. So accordingly, this K complex, spindle, everything is there, but probably this is difficult to cover in this class. It is a part in postgraduate education. Anyway, I have shown something. Then typical of this sleep cycle. जब आप सोने जाते हो रात में, शुरू होता है नॉन रेम स्लीप से, और जब जब रात बढ़ते रहता है, सुबह की तरफ जाते रहते हो, मोर नंबर ऑफ नॉन रेम स्लीप आते हैं, रेम स्लीप आते हैं, और नॉन रेम स्लीप धीरे धीरे कम हो जाता है. ये जो राइट साइड का जो स्लाइड है, पिक्चर है वेब फॉर्म में जो देख रहा, इसमें जो ब्लू कलर का है ये रेम स्लीप. तो ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू कैन फाइंड दैट the REM sleep is more and more.
हम लोग जब सोते हैं शुरू में ही डीप स्लीप ज्यादा होता है, जब सुबह की तरफ थोड़ा हल्का स्लीप हो जाता है, रेम स्लीप। इसका एज के साथ भी रिलेशन है। लेफ्ट साइड का जो पिक्चर है लाइन ग्राफ, उसमें देखो जब कम उम्र है डेज में, मंथ्स में, कोई बच्चे का 3 मंथ्स 5 मंथ्स एज है, उसमें देखो रेम ब्लैक कलर का कितना मोटा है, बहुत तगड़ा रेम होता है। जब एज बढ़ते रहता है रेम ड्यूरेशन कम हो जाता है। रेम को बोलते हैं हम लोग ड्रीम। ड्रीम दोनों में ही होता है, अगर जो ड्रीम हम लोग याद रख पाते हैं वो है रेम वाला ड्रीम। तो बच्चे बड़ा सपना देखता है, आपका कम उम्र है, आप बहुत सपना देखते हो, जब उम्र मेरे जैसा हो जाओगे सपना धीरे धीरे छोटा होते रहेगा। This statement has both the meaning. One is literal meaning and another is philosophical meaning. Yes, at this age, I don't have much scope in my life, so my dream has reduced. This is philosophical. And literal meaning is physiologically, at this age of my life, RAM is shorter than you. So age has a factor. Then coming to the topic of today, sleep disorder. If you have any question, you can write in the question part. I will answer. There are two major categories. One is dysomnia and another is parasomnia. Dysomnia means amount of sleep and bad timing of the sleep. That is called dysomnia. Parasomnia, something abnormal occurring during the sleep. That is called parasomnia. जैसे नींद में किसी को लात मार रहा है, नींद में बड़बड़ कर रहा है, बक बक कर रहा है, बात कर रहा है, नींद में चल रहा है, नींद में स्माइल कर रहा है, नींद में वायलेंस कर रहा है, ये जो एबनॉर्मल बिहेवियर ड्यूरिंग स्लीप, दोस आर कॉल्ड पैरासोम्निया। डिसोम्निया मींस बहुत कम सो रहा है, ज्यादा सो रहा है, गलत जगह में सो जा रहा है, गलत टाइमिंग में सो रहा है, इसको बोलता है डिसोम्निया। स्लीप डिस्टर्बेंस मेडिकल कंडीशन में भी होता है, associated other conditions like diabetes, hypertension, ischemic heart disease, hormonal disorders, gynecological disorders, obstetrical disorders, and others. Then substance. Substance means like cannabis, like BD, cigarette, alcohol, and others. These are associated with sleep problem. So primary insomnia. Primary insomnia means insomnia, as you know, there is little sleep, inadequate sleep, non refreshing. आप सो रहे हो मगर मजा नहीं आ रहा, जब उठते हो तब लगता है और थोड़ा सोने से मजा आता। इसको बोलते हैं इंसोम्निया। हो सकता है आप 10 घंटा सो रहा, फिर भी उठने के बाद अगर आपको लग रहा है सोना कम हो गया और सोना चाहिए मेरे को, दिस कुड बी ए insomnia. Insomnia does not mean always that if you have more than 8 hours sleep, 6 hours sleep, it is not insomnia. Yes, it is. It could be insomnia if you are not satisfied with your sleep. Insomnia and depression, they are very interrelated. Which one comes first? It's very difficult. It is something like anda and murga. मुर्गी अंडा में जैसे रिलेशन वैसे। Major depression, manic episode, anxiety, these are some of the psychiatric illness which is associated with severe sleep disturbances. Misuse of substance, cannabis, as I told you, even BD cigarette and other medicines, prescribed medicines also sometimes create problem in sleep. Breathing related problems, सांस की तकलीफ हो रहा है, any pain in the body, starting from headache, low back pain, leg pains, etc. Primary insomnia treatment. This is very important.
Try to remember this slide. Vigorous daytime exercise, मगर not before sleep. रात 9 बजे आप सोने जाते हो, 6 बजे के बाद एक्सरसाइज बंद, उसके पहले जितना करना कर ले. Sexual intercourse, if it is pleasurable, then only. And the interpersonal relationship with the partner regarding this should be solved prior to the sleep. ये जो हम लोग क्लॉक यूज करते हैं उसको खच खच करके जो पर सेकंड एक आवाज होता है, स्पेशली अलार्म क्लॉक एंड वॉल क्लॉक, इसका 60 बीट्स किसी क्लॉक में देखना, 60 सेकंड्स में 60 से ज्यादा बीट्स होता है. वो हार्ट के साथ मैच करवा के रखना बेहतर है. किसी क्लॉक में ऐसा होता है जिसका स्लीप डिस्टर्बेंस हम लोग मना ही करते हैं कि वॉल क्लॉक और अलार्म क्लॉक मत लगाया करो, इसका आवाज से आपको डिस्टर्ब होगा, क्योंकि ये हार्ट बीट के साथ हार्ट बीट भी सुनाई पड़ता है जब आप सोते हो, स्पेशली थिन बिल्ड पर्सन, तो मिसमैच होने से डिस्टर्ब होता है. रिलैक्सेशन एक्सरसाइज रेगुलरली एटलीस्ट 5 मिनट and decrease stimulation after 6 o'clock. जब 9 o'clock आपका प्लान है, एटलीस्ट 2 to 3 hours prior, कोई भी फ्लैशिंग स्क्रीन लाइक लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, everything should be off. And there is no hot drinks at least 3 hours before the sleep, like coffee, tea, etc. And we usually prescribe not heavy meal during the dinner and take little bit of light food just before going to bed. This is called sleep hygiene. Most of the times in milder variety of sleep disturbance, this is helpful. Then primary hypersomnia. Hyper means ज्यादा सो, पढ़ते पढ़ते सो जा रहा है, 8 घंटा 10 घंटा रात में सोया, फिर भी सुबह में सो रहा है. सो एक्सेसिव स्लीपीनेस. अगर आप पूछोगे कितने घंटा स्लीप होने के बाद हाइपर इंसोम्निया होता है, ऐसा कुछ नहीं है. If you feel refreshing even after 12 hours of sleep, that is your adequate sleep. That is your physiology. Different people, the physiology are different. Some people, it is the requirement of 5 hours sleep. In some people, it is the requirement of 12 hours. So depending upon your body's requirement, your brain's requirement. Primary insomnia may be a feature of major depressive disorder and sometimes dysthymic disorder and atypical feature of depression. There are some features which are atypical to depression. Hypersomnia is one of them. Anyway, so it could happen in sleep. This sleep disorder can be associated with depression. Treatment is do some exercise when becoming sleepy. Modafinil and sustained release amphetamine, methylphenidate. Usually do not prescribe methylphenidate, but it can be done. But amphetamine and modafinil can be used. But be careful before prescribing these molecules, because every possibility that you have misdiagnosed the case. Most of the cases I find it is not required. There must be some other reasons for hypersomnia, which can be treated very easily. Narcolepsy, डिनर में बैठ बैठ के सो जा रहे खाने के ऊपर, बेड टाइम में वाइफ के साथ बात करना और अदर एक्टिविटी करना, वो सब छोड़ के फटाक से सो जा रहा है. वेरी रैपिड ऑनसेट स्लीप. दिस कुड बी ए नार्कोलेप्सी. डे टाइम में ऑफिस में सो जाना, बॉस के सामने सो जाना, टीचर के सामने सो जाना, इनअप्रोप्रिएट प्लेस, इनअप्रोप्रिएट टाइम में सोना, ये अगर है तो सस्पेक्ट नार्कोलेप्सी. उसका अदर फीचर आपको ढूंढना पड़ेगा कि
narcolepsy defining other features are present or not. This narcolepsy sleep lasts for 10 to 15 minutes as much as. Sometimes it is only 2 to 5 minutes and it is refreshing, and it is associated with sleep paralysis, sudden loss of strength of catalepsy. Just a minute, I can show you one thing. If you are visible, if I am visible to you, this sudden loss like this, फिर ठीक होगा. मैं नेक को करके दिखा रहा हूं आपको. सडन लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, फिर ठीक होगा. This type of thing sometimes you can find. Next is excessive daytime sleep. इसमें क्या होता है? नार्कोलेप्सी हो सकता है, इडियोपैथिक हाइपरसोम्निया, रिकरेंट हाइपरसोम्निया एंड सेकेंडरी हाइपरसोम्निया. तो we have discussed most of these. So daytime sleep में ये सब हो सकता है. ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, खराटे लेना के चक्कर में आपके साथ जो सोएंगे, जो बेड शेयर करेंगे, रूम शेयर करेंगे, उसका तो बर्बादी होगा. It is a sleep related breathing problem. One example is obstructive sleep apnea. Why it happens? Because of the soft palate problem, pharyngeal problem. Surgery, sometimes it is prescribed, very rarely, but it is not that beneficial. आप करवाट लेके सो जाओ, पीठ के पीछे एक बॉल रख दो, जो क्रिकेट बॉल होता है, वो प्रिवेंट करेगा आपको सीधे होके सोने के लिए. तो करवाट लेने से काफी हद तक कम हो जाता है. यूजुअली बेड पार्टनर ये सब जान करते हैं. आफ्टर सम टाइम दे कैन लर्न and they practice it. It is sometimes, most of the times rather, it is beneficial. And positive pressure ventilation, छोटा छोटा machine खरीदने को मिलता है. It is very costly, maybe 4 lakh 5 lakhs. It is very helpful. Positive pressure, because होता क्या है, सॉफ्ट पैलेट बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, वो नीचे आ जाता है और आपका जो लैरिंग्स है उसके ऊपर गिर जाता है, तो लैरिंग्स बंद होने को लगता है. Then there is a sound. Circadian sleep disorder. Many times you can find in the international airport, people are sleeping like this. And many times you can find जो सब सिस्टर लोगों को लगातार नाइट ड्यूटी कर रहा है. कोई देखा है हम लोग ऑक्सीजन प्लांट में, आपका लोकनायक हॉस्पिटल में भी मिल सकता है. ऑक्सीजन प्लांट में नाइट ड्यूटी कर रहा है 2 साल से. वो रात भर जगे रहता है, दिन भर सोते रहता है. तो एक रिदम का प्रॉब्लम हो जाता है जो हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है. जो लोग बहुत लंबा सफर करता है शॉर्ट टाइम में, जैसे यहाँ से यूरोपियन कोई कंट्री में जा रहा है, यूरोपियन कंट्री से इंडिया में आ रहा है, तब जाके जेट लैग बोलता है इसको, क्योंकि क्लॉक का डिफरेंस हो जाता है. तो हाइपोथैलेमस कंफ्यूज हो जाता है कि कब सोना है, कब जगना है, कब कम करना. इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा ट्रिकी है, डिफिकल्ट भी है. मेलाटोनिन इसमें यूज होता है. Usually during the daytime, say for example, somebody went to UK and landed today from India, he should use darker bedroom during the daytime, in the not day, in the afternoon time, and try to get into sleep. And other normal things like soundproofing, limit the caffeine, as I told you. But it is very difficult for the other family members how to accommodate it.
somebody is going for sleep in the evening 5 o'clock or 4 o'clock, it is difficult for them. So sometimes melatonin is helpful. Then these are not for you. Nightmare, this is common in child. Sometimes you can find some parents are coming to you with their child of 5 years or 7 years old कि बीच बीच में उठ जाता है, बहुत डरावना लगता है उसको, तुरंत उठ के सबको पहचान लेता है। ऐसा नहीं है कि कॉन्फ्यूज रहता, डर के चिल्ला के उठ जाते हैं, उसके बाद ओरिएंटेड हो जाता है, सबको पहचान लेता, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। ये अर्ली मॉर्निंग के तरफ होता है। जैसे फिजियोलॉजी में मैंने बताया अर्ली मॉर्निंग की तरफ रेम स्लीप ज्यादा होता है, तो ये रेम स्लीप प्रॉब्लम है। जब बच्चे का स्कूल में कोई स्ट्रेस रहता है, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा डांट रहे हो, तब ये ज्यादा होता है, तो घर वालों को लगता है ये नौटंकी कर रहा है। ये नौटंकी नहीं, इस स्ट्रेस से स्लीप के ऊपर इफेक्ट होता है। यूजुअली यंग एज में हम लोग देखते हैं 5 years 10 years, नॉट बियॉन्ड 10 years, रियली बियॉन्ड 10 years। एंड दिस डरावना सपना जो है, दे कैन रिमेम्बर इट। समटाइम्स रेम सप्रेसेंट जो हम लोग एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन यूज करते हैं, उसको विड्रॉल में इस तरह चीज हो सकता है, तो ग्रेजुअली विड्रॉ करने से प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट इज स्लीप टेरर। इसमें ऑलमोस्ट सेम चीज होता है, मगर नॉन रेम स्लीप में होता है, इसलिए अर्ली पीरियड्स ऑफ स्लीप में होता है। बच्चे में ज्यादा कॉमनली होता है, मगर बच्चा रिमेम्बर एकदम नहीं कर पाता है, थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, उठने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, चिल्ला के उठते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है, and he cannot communicate anything what happened. That is the difference because between sleep terror and nightmare. Almost same. Sleepwalking, you may find in the Hindi films very often. In the earlier film कादिर खान का फिल्म था, उसमें भी था, उसमें नींद में चलने लगता है, मगर एडल्ट लाइफ में नींद में चलने की ये बीमारी कम होता है, ये चाइल्ड में ज्यादा होता है। But if it occurs in adult and even in child, it can be very, very dangerous. And if it is neglected, it remains untreated, high possibility there would be some life-threatening accident. You must have heard in your hostel this type of story. Sometimes it is heard in the hostel life कि 10 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था। तो anyway, ये फैमिली में होता, जेनेटिकली ट्रांसमिटेड, मगर इसका जेनेटिक डिस्पोजिशन कितना है अभी तक समझ में नहीं आया। स्लीप वॉकिंग का तरीका क्या है? हिप्नोसिस, बायोफीडबैक, रिलैक्सेशन, ये सब तो कर लिया। नहीं होता है तो प्रैक्टिकली जो हम लोग करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि घर के अंदर उसको बंद कर दो, जहाँ पर बाथरूम है, अटैच बाथरूम है, वहां पर रख दो उसको, बाहर से लॉक लगवा दो, और ऐसा करके करो कि वो अगर चिल्लाए, कुछ बोले, तो बाहर वाला लोग सुन पाए, so that he can be saved if there is any requirement. Otherwise जो बाहर जाएगी और एक्सीडेंट होगा, इसलिए स्लीप वॉकिंग का इस तरह होता है। Other parasomnia like sleep talking, sleep paralysis, these are not that common. Then other medical disorder, as I told you, and other insomnia and hypersomnia, maybe ज्यादा सो रहा है, maybe कम सो रहा है, दोनों ही हो सकता है मेडिकल प्रॉब्लम। Substance induced, yes, some addictive substance cause insomnia, hypersomnia, parasomnia, all type, but parasomnia is rather uncommon. We are seeing less common. This is very important. Bad dreams. डॉक्टर साहब, इतना बुरा बुरा सपना आता है, रात भर हम सो नहीं पाते। इट कुड बी ए फीचर ऑफ पीटीएसडी बोल के एक बीमारी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, उसमें होता है। मोस्ट ऑफ द एंजाइटी डिसऑर्डर में बैड ड्रीम्स होता है,
So you have to find whether there is any PTSD, any anxiety disorder, and obviously these two, nightmare and night terror. But always remember, अगर adult में हो रहा है, chances ज़्यादा है PTSD and anxiety traits. अगर आप मेरे से पूछोगे तो most common is anxiety. PTSD rare in our country. It is more common in Western. Nightmare and night terror is common in our country, especially in child. Recurrent bad dream. Antidepressant काम नहीं करता. Clonazepam, it works, and other benzodiazepines, it works. Alcohol withdrawal में होता है bad dream. So alcohol is bad for bad dreams. It can precipitate bad dreams. Next is periodic leg movement. रात में सोते हैं तो पैर हिलाते रहते. ये कैफीन लेने से, वाइन लेने से, कुछ एंटी डिप्रेसेंट में ऐसे ज्यादा होता है. क्या करने से कम होता है? एक्सरसाइज, वार्म बाथ, स्ट्रेचिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट, डोपामिन एगोनिस्ट, रोकिनेरोल हम लोग प्राइमिफेक्सोल यूज करते हैं कभी कभी, बट इट इज नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल. रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, almost I have covered. Iron supplementation, sometimes it is helpful. Restless leg syndrome and periodic leg movement का difference ये है, periodic leg movement में आसपास का जो सोए रहेंगे आपके साथ, बेड पार्टनर होंगे, उसका इंजुरी होने के चांसेस है. मगर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मूवमेंट का रेंज कम होता है. इसमें आयरन डिफिशियंसी में ऐसा हो सकता है, तो आपको देखना पड़ेगा, पीरियोडिक लेग मूवमेंट देखना पड़ेगा. तो आई थिंक you should care for your sleep. You should care for the sleep of your patients. Maybe tomorrow you will be a gynecologist, you will be an ophthalmologist, you will be a ENT specialist or anesthetist. Don't ignore the sleep problem. Sleep is like food. If you do not give food to a human being, he may commit suicide. Similarly, sleeplessness is one of the frequent cause for suicide in life. So don't ignore it, for you and for your patients. So that is all about sleep. Unfortunately, one of my pen drive becomes corrupted today morning. There I made a beautiful series of slides for about 10, where I was about to show you the reason for dream in human being. हम लोग सपना क्यों देखते हैं और उस सपने का मीनिंग क्या होता है. ये साइकियाट्री में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, जो फिजियोलॉजी और अदर सब्जेक्ट में कभी सिखाया नहीं. सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी. I have finished this early, so I can take questions. Okay, it's invisible. I'm coming one by one, the questions. We cannot write in the chat box. Okay, yes, sir. What is if someone sleep in day, not in night? एकता जादव ने ये क्वेश्चन पूछा है, what if someone sleeps in day but not in night? देखो बेटा, ये प्रॉब्लम है, बहुत कॉमनली देखा जाता है. And I feel as a physician helpless in these cases, because it is a behavior which developed since childhood most of the times, and it remains for rest of the life. It creates problem in rest of the life. It is very unfortunate. Those who do it, in simple language,
This is for bad habit that is being inculcated by himself or herself. Whatever the reason may be, maybe the social circumstances, familial circumstances lead to this, but chances are less. Most of the time, it is the neglect to discipline. इनडिसिप्लिन होने के ह्यूमन बीइंग में एक इंस्टिंक्ट रहता है और उसी का सबसे बड़ा एग्जांपल ये है। और एक बार अगर ये स्लीप ऑल्टरेशन हाइपोथैलेमस में हो गए, इसको रिवर्स करवाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अगर कोशिश करना होता है, इट मे टेक 10 years टाइम टू रिवर्स इट। Otherwise, there are some medicines, but to my belief, in my experience in clinics, it is not that helpful. So be very careful from the beginning. In child, don't allow this. सुबह 12 बजे तक सोना और रात 3 बजे तक पढ़ना, इसमें कोई क्रेडिट नहीं। आपका प्रोडक्टिविटी सेम रहे, आपका करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मगर बाद में जाकर दिक्कत हो जाएगी। सोशल लाइफ में, फैमिलियल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम। जब आपका सोशल लाइफ नहीं है, फैमिली लाइफ नहीं है, तब आपसे ज्यादा गरीब आदमी दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि जब आपका फ्रेंड्स नहीं है, आपका पूछने वाला नहीं है, सब लोग भाग जा रहा है आपके परेशानी के कारण, then it is meaningless life. कैरियर तो बन जाता है, इसमें कैरियर में प्रॉब्लम नहीं होता, मगर लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है आगे जाके। नेक्स्ट, सर, कैन SSRI affect sleep too? Sometimes SSRI like fluoxetine, like venlafaxine, they may cause sleep disturbance itself. But at the same time, this side effect is helpful for hypersomnic patients. So we use it for them. Next question is, what is biofeedback training? बायोफीडबैक ट्रेनिंग कैसे होता है? जैसे आपका एंजाइटी हो रहा है, एग्जाम में आपको एंजाइटी हो रहा है, then your respiration rate would be high. If I show you your respiration rate in a screen, it is electronically measured and shown in front of you in a screen that currently your respiration rate is, say for example 35, and you are feeling anxiety. Now I am giving you some technique so as to decrease the anxiety out of exam. Now you can find gradually the respiration rate is coming down from 35 to 25, then 22, then 21 and similar. इससे फायदा क्या होता है? आदमी का जब बेनिफिट तुरंत आता है लाइफ में ना, वो उसी काम में ज्यादा मजा लेता है, जिसमें आपका मजा लेट में आता है। जैसे छोटे बच्चों को अगर बताओगे कि बेटा कोई भी सब्जेक्ट में अगर अच्छा करना है, you should have a good language in terms of your mother tongue, maybe Hindi or maybe something else, and in our country English. You have to have good English and good in mother tongue. बच्चे को समझ में नहीं आता, जब वो बड़ा होता है, मेरा जैसे उम्र हो जाता है, then he can understand. Yes, it was true. मगर by this time it is too late. यही प्रॉब्लम होता है। रीइंफोर्समेंट जब तुरंत मिलता है, आपको रीइंफोर्समेंट मिला, हाँ मेरा रेस्पिरेशन घट रहा है, तुरंत मिल रहा है, तो रेस्पिरेशन घटाने के चक्कर में, एंजाइटी घटाने के चक्कर में आपका मोटिवेशन बेहतर हो। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ बायोफीडबैक। बायोफीडबैक का मतलब होता है आपको कुछ दिखाएंगे which is beneficial for you, and it is the actual form,
इट इज नॉट फर्जी कुछ नहीं है। जो आपका ओरिजिनल हार्ट रेट है, जो रेस्पिरेशन है, जिसमें आप काम कर रहे हो, एंड इट इज बेनिफिशियल एंड यू आर डूइंग वेल, सो आई एम गिविंग फीडबैक एवरी मोमेंट। इसको बोलता है बायोफीडबैक। Next question is, sir, you can tell us verbally what? I could not understand. Verbally about dream. Okay. You can tell us verbally about dream. Okay. It was very interesting, but I am unfortunate enough that the things has corrupted. I could not say it. It was very funny. If I can show you the pictures, then it would be very interesting. Anyway, I am trying my best. एक आदमी सपना देख रहा है, रिकरेंट सपना हो रहा है। हम लोग करते क्या है, ड्रीम को कैसे एनालिसिस करते, बोलते हैं कि आपका ड्रीम में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा करो, एक एक्सरसाइज किताब ले लो, आई मीन नोटबुक ले लो, उसमें जब आप सुबह में उठोगे ना, आज का 2 ड्रीम नहीं तो 1 ड्रीम मेरे को याद है, तो तुरंत लिख डालो, जितना डिटेल आप लिख सकते हो, और बना के मत लिखना, जो एक्चुअल आपको याद है उतना ही लिखना। बाद में एंड ऑफ द मंथ हम लोग उसको पढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं ज्यादातर प्रॉब्लम में कि मान लो 1 मंथ में उसको टोटल 20 स्लीप याद है, जो जॉटेड डाउन किया है। उसमें देखा जा रहा 4 रिपीटेशन है, मैक्सिमम रिपीटेशन जिसमें है, एक स्लीप है, एक ड्रीम है जिसमें 4 रिपीटेशन। हम उसको एनालिसिस सबसे पहले, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम रिपीट किया है एक आदमी में, मेरे रिसेंट एक पेशेंट कि एक मेल पेशेंट, वो बोलते हैं कि मैक्सिमम रिपीट इस तरह होता है, मैं देखता हूं एक आदमी बैठा हुआ है, वो कुछ पहना नहीं है, मगर उल्टा साइड से दिख रहा, पीठ की तरफ से मैं देख रहा, थोड़ा सा डार्क है आसपास में, उतना अच्छा लाइट नहीं है, प्रोबेबली एक ही पर्सन बैठा है, एंड मोस्ट peculiar is whether it is he or she, the person cannot understand. Every time the person tries to identify whether it is a she or he, but unfortunately he cannot do it. पेशेंट को कहना है, जिंदगी में बहुत बार मैंने ये सीन देखा है, मे बी लिटिल बिट डिफरेंट, मगर मोर और लेस थीम ऐसा ही है। ठीक है, एक आदमी अक्सर फ्रीक्वेंटली ऐसा स्लीप आता है कि बड़ा सा कोई चीज जो काला कलर का है मेरे ऊपर आ जाता है और मेरे ऊपर हावी हो जाता है, यानी कि मेरे ऊपर गिर रहा है, मगर गिर रहा है, कुछ हो नहीं रहा है मेरे, मैंने इतना बड़ा पत्थर, मान लो 20 फीट बाय 20 फीट लंबा एक पत्थर, वो मेरे ऊपर गिर रहा है एक के बाद एक, मैं डर जा रहा हूँ, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है मेरे। और एक आदमी देख रहा है कि मैं जब क्लास 2 में था, मेरा सबसे बुरा हालत था केमिस्ट्री में से, फॉर एग्जाम्पल, तो अक्सर मेरा सपना ये आता है कि मैं कोई एक एग्जाम देने जा रहा हूँ, से फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री, और मेरे को कुछ भी याद नहीं है, मैं कुछ भी याद नहीं कर पा रहा। और एक आदमी बोल रहा है मेरा हालत भी ऐसा ही है, मेरा लैंग्वेज में इतना वीक था, मेरा सपने में आता है मैं एमडी पास कर गया, फिर भी गवर्नमेंट बोल रहा है आप क्लास 2 में लैंग्वेज में वीक थे, वो स्ट्रॉन्ग करो, नहीं तो आपका एमडी का जो डिग्री है वो null and void हो जाएगा, आपका एमबीबीएस का जो डिग्री है। सो आई हैव टू सिट फॉर एग्जाम इन लैंग्वेज एंड आई एम वेरी वरीड। I cannot remember any poem, any story, any character, and full of spelling mistake in my paper.
So it is very distressing. So these are the example. You might you may find some similarity in your own life also. So patients come to us with this type of behavior. I can show you how it happens. I can tell you how it happens. The first example, it is very common, this type of sleep dream to us. You can understand the person is a human being, not an animal, not a tree or something. But you cannot identify that it is male or female. The reason is, in unconscious mind, there is a confusion in that person regarding the homosexuality, whether this sexual behavior towards opposite sex or same sex, which one is correct, which one is incorrect, why it is incorrect, why it is correct. So this is the representation. अभी इस चीज को लेके डिस्कस करना हम लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है, मगर स्लीप एक बड़ा अच्छा जगह है, प्लेटफॉर्म है, जहां पर कुछ भी कर लो, नोबडी इज देयर। मगर ऐसा भी नहीं है, स्लीप में भी लोग डरते हैं। इतना ज्यादा डर है कि स्लीप में भी डर लगता है ये सब चीज डिस्कस करके। इसलिए उस आदमी मेल है कि फीमेल है आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। तो मुद्दे की बात यह है कि आपका एक अनकॉन्शियस माइंड में कंफ्यूजन है regarding sexual behavior of you and your partner or maybe your close relatives. The example I gave you, बड़ा बड़ा काला काला पत्थर मेरे ऊपर आके गिर रहा है. This is nothing but, if you corroborate with his life, we find वो प्राइवेट जॉब करता है, अलग अलग ऑफिस में काम किया है, हर जगह में मोर और लेस उसका जो बॉस मिला है, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी हार्श, उसका लैंग्वेज खराब है, बात बात में डांटता है, चिल्लाते हैं, मगर टाइम पास हो जाता है। अभी बॉस के ऊपर कैसे रिएक्ट करना है वो उसका बस की बात नहीं है, वो समझ ही नहीं पा रहा, इसके लिए एंग्शियस है, जनरलाइज्ड एक एंजाइटी डिसऑर्डर लेके हमारे पास आया। अभी ये स्लीप जब आया तब हम लोगों का इंटरप्रिटेशन ये होता है ये इतना आसान नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ, ये साल भर लग जाता है इसका एनालिसिस करने में हम लोगों के पास। मैं ब्रीफली बता रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट टाइम है, जब पीजी पढ़ोगे तब ये सब डिस्कशन होता है, लंबा डिस्कशन होता है। एनीवे, तो इसमें क्या हो रहा है, वो बड़ा बड़ा पत्थर जो है आपके ऊपर गिरेगी तो आप तो मर जाओ, मगर एंड ऑफ द डे कुछ होता नहीं है। मगर जब मेरे ऊपर गिरता है तब तो एंजाइटी लगता है ना, हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ इट। सो देखा जब हम लोग उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं रियल लाइफ, तब जाके ये ड्रीम धीरे धीरे घट जा रहा है। तो इस तरह होता है ड्रीम। ड्रीम का मेन रीजन होता है कि आपका कोई कॉन्फ्यूजन है, तो वो ड्रीम में एक्सप्रेस होता है। आपका कोई एंजाइटी है क्योंकि आपका कोई विश है जो आप रियल लाइफ में कर नहीं सकते। से फॉर एग्जांपल, एक बच्चे का जबरदस्त विश था कि एक बार तितली जैसा उड़ूं, तो छोटे में होता है ऐसा, ठीक है, मगर ये विश इतना ज्यादा था कभी कर नहीं पाया। एडल्ट लाइफ में उसको सपना आता है कि हम कहीं पर खड़े हैं और आई एम वेरी अनस्टेडी, हम गिर जाएंगे, हम इधर गिर जाएंगे, हम पीछे गिर जाएंगे, हम सामने गिर जाएंगे, और एंजाइटी होता है, मैं नींद से उड़ जाता। मगर नींद में ऐसा नहीं लगता है कि मैं उड़ रहा हूँ, एक्चुअली नींद में उसका विश फुलफिलमेंट हो रहा है। मगर नींद में, सॉरी ड्रीम में जब विश फुलफिलमेंट होता है, नहीं तो एंजाइटी एक्सप्रेस होता है, वो आधा आधा दिखता है, पूरा आपको समझ में नहीं आएगा, ये सिंबॉलिक होता है। रियल लाइफ में जैसा होता है वैसा नहीं होता, तो सिंबॉलिक है,
वो सिंबल कैसे आता है, कैसे जाता है, वो भी लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में सिखाते। कितना तरह का सिंबल हो सकता है, उस सिंबल का मीनिंग क्या हो सकता है, ड्रीम एनालिसिस में होता है। तो इस तरह विश फुलफिलमेंट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढ रहे हैं, मेरे को नहीं मिल रहा, उस क्वेश्चन का आंसर इतना डिफिकल्ट है जो मैं टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूं। जैसे एक एडोलेसेंट गर्ल, उसका एंजाइटी हो रहा है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो रहा है, डिप्रेशन है, हमारा फंसा है। बाद में हम लोगों का हिस्ट्री से पता चला हस्बैंड वाइफ में भयंकर लड़ाई होता है, मैंने पेरेंट्स, इतना ज्यादा लड़ाई होता है कि डिवोर्स होगा, बीच बीच में सोशल सेपरेशन हो जाता है, 1-2 साल अलग अलग रहते हैं, फिर एक साथ होने लगता है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम टू द चाइल्ड? कोई सॉल्यूशन नहीं है। तब जाकर ड्रीम में आना शुरू कर दिया, इसका सॉल्यूशन क्या है? वो ड्रीम में ये देख रहा है कि दो चिड़िया एक ही घोंसले में रहता है, मगर घोंसले ज्यादातर खाली रहता है, बीच बीच में दो घोंसले रहते हैं। ये जो बीच बीच में दो घोंसले रहता है, ये है विश उसका, और ज्यादातर खाली रहता है, ये रियलिटी है। दोनों को दिखा रहा है। ये एग्जाम्पल थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन ड्रीम एनालिसिस इट इज नॉट दैट इजी, it requires lot of work to be done before you can understand. और आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो हाइपोथेसिस बनाया हो, जो समझे वो सही समझे हो? अगर आप सही समझोगे ना तो पेशेंट ठीक हो जाएगा, और अगर सही जगह में आप नहीं पकड़ पाए तो ये ठीक नहीं होगा, ये प्रॉब्लम है। इसलिए ड्रीम एनालिसिस इन सम पेशेंट्स इट इज हेल्पफुल, it is not that every psychiatric patient requires sleep I mean dream analysis and they are helpful, no, it is not. So this is called dream. Any other questions? Okay, sir. Thank you. So, sir, biofeedback is giving motivation based on patient's vitals and yes, biofeedback motivates the people. Deja vu क्या होता है? Any other questions? Please, you can write. Any other questions? Deja vu क्या होता है? आप बस में सफर कर रहे हो 200 किलोमीटर दिन में, अननोन रूट है, आप नहीं जानते हो, उस रूट में कभी गया नहीं। से फॉर एग्जांपल आप यहाँ से अहमदाबाद जा रहे हो बाई बस, बाई रोड, 50 किलोमीटर जाने के बाद उस रूट में कभी गया नहीं, एक जगह में चाय पीने के लिए बैठा, तो आपको लग रहा है इस जगह देखा देखा लग रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है, कोई भी एक्सपीरियंस लेके मेमोरी के साथ मैच नहीं करता, दैट इज कॉल्ड डेजा। ये यूजुअली जब आदमी थक जाता है, जब आदमी का स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, जब आदमी नशा करने के बाद अगला दिन सुबह, इस टाइप का एक्सपीरियंस होता है। नहीं तो कुछ कुछ जगह में जैसे कोई साइकेट्रिक इलनेस आने वाला है, उसके पहले इस तरह चीज होता। सो किसी का अगर बार बार ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है इन मेमोरी एंड एक्सपीरियंस मिसमैच हो रहा है, तो वे प्रिडिक्ट कर सकता है कि कोई साइकेट्रिक इलनेस अंडरलाइन चल रहा है, नहीं तो आने वाला। सो आई थिंक देयर इज नो फर्दर क्वेश्चंस. Do you have any other questions? Audio is breaking. Could you please repeat what is deja vu? Okay, okay, okay. Uh, Probably this internet is not good enough. Just I am seeing. Just a minute. I am taking it.
Is it audible now? Is it clear to you? Okay, the audio is okay. Okay. डेजा vu होता क्या है? जो जायगा को आप नहीं जानते हो, जो आदमी को आप नहीं जानते हो, जिस तरह एक्सपीरियंस पहले नहीं हुआ, वो आपको लगता है कि नहीं मेरा देखा हुआ है, मैं इसको जानता हूँ, मैं इस तरह सेंसेशन मेरे को पहले भी हुआ है. दिस इज यूजुअल. जब कोई साइकिट्रिक इलनेस का अर्ली शुरुआत हो सकता है. कभी कभी होता है नेचुरली, फिजियोलॉजिकली भी होता है. जब आदमी बहुत ज्यादा थका हुआ रहता है, टायर्ड है, वीक है, जनरल सिस्टमिक इलनेस है जिसके कारण वीक है, कॉन्वालेसेंट पीरियड में है, प्रोलॉन्ग फीवर हुआ था, फीवर ठीक हो गए, उसके बाद ऐसा होता है. कभी कभी ऐसा लगता है एक फैक्ट्री के बगल से आप जा रहे हो, एक पिक्यूलियर स्मेल आया, उस तरह स्मेल शायद आप कभी जिंदगी में नहीं मिला, क्योंकि वो केमिकल का है, उस फैक्ट्री से निकलता है. उस फैक्ट्री के आसपास आप जिंदगी में पहला बार गए, मगर आपको लगता है ये जो स्मेल है पहले मैं कभी मेरे को मिला है, मगर इट इज डिस्टिंक्ट, इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द स्मेल्स इन माय लाइफ. Sometimes this is deja vu. Okay, any other questions? Please ask me any other questions. In the next class, we shall be discussing organic psychiatry. I am requesting most of you try to be present, because it is very interesting and very difficult also. If you are not going to be a psychiatrist in future, no problem. But problem is there if you do not understand the organic psychiatry. Maybe you will be an ophthalmologist, ENT specialist, anesthetist. You will face every day this organic psychiatry. Every day I am telling you. If you are seeing the patient, if you are not seeing the patient, if you are in non-academics, if you are in non-clinical subjects, if you are not touching, you are not in touch with patients, then you may not see. Otherwise, if you are in the clinical field, you have to face every day. I am giving you an example. Confused patient appearing in your clinic or emergency. Confusion. Patient confused है, इधर उधर भाग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा. पोस्ट हेड इंजरी पेशेंट आ गया, इधर उधर भाग रहा है, इंजरी उतना ज्यादा नहीं है. अनकॉन्शियस पेशेंट रोड साइड से उठा के लेके आए, क्या करेंगे अनकॉन्शियस पेशेंट के साथ, कैसे अप्रोच करना होता है. ये बहुत ट्रिकी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, डिफिकल्ट है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस इट. दैट इज ऑर्गेनिक साइकिट्री. I hope next time it will be more interesting. Okay, Dr. Mehak Gupta asked a question. Why some people have good intuition power? It is nothing magic. It is an abstract ability of the brain. आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका ब्रेन उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे. कोई कोई प्रेडिक्ट करना उसको मजा आता है, छोटे से ही वो प्रेडिक्ट करना पसंद करता है. ये आदमी ये करने वाला है, ये आदमी ऐसा होने वाला है, ये ऐसा करने वाला है, ये ऐसा होने वाला है, ये ऐसा फील करने वाला है, ये अभी ऐसे बोलने वाला है. उसको मजा आता है और उसका ब्रेन ट्रेंड हो जाता है. कुछ दिन बाद में लोगों को बिहेवियर देखते हुए प्रेडिक्ट कर सकता है. इट इज a very sophisticated skill. It is developed, and sometimes it is not developed, it is given by the God in his brain. More your brain has the capability in abstract sense, more will be your intuition power. Intuition is nothing but a predictability in terms of mathematical calculation.
जैसे अगर ये बढ़ रहा है तो वो घटेगा, ये तो कॉमन सेंस है, इसलिए मेरा प्रेडिक्शन सही हुआ। इस टाइप का चीज होता। ह्यूमन बिहेवियर देख के प्रेडिक्ट करना, हम लोग साइकियाट्रिस्ट है, हम लोग भी नहीं कर पाते। अगर कर पाते तो इतना सुसाइड नहीं होता, सब हम लोग प्रिवेंट करते, नहीं होता। मगर इंट्यूशन टू सम एक्सटेंट, इट इज a trained brain function. Any other questions? Otherwise I have to leave. Okay, okay, so I am leaving. Next time, hope to see you again. Thank you. Attendance 150.